Hi, good evening, everyone. Okay, so this session is particularly related to a query which many of the students have recently came up with. ठीक है, जो across I would say different streams of students also it's common. ठीक है, not only in eco, right? And that is related to few deemed universities and private universities who conduct their own entrances. ठीक है. And first of all, before I begin the session, so again, basic ritual, let's check for any sort of update. So this is the home page. Again, the last update is related to the four city examination city choices. That's it. Okay. No further, no new update related to CUET PG 2026 as of now. Also, your last date is about to hit, which is 14th of January. So many of you would have already kind of completed it or would be in process of completing the registration. Having said that, no doubt there might be, so officially कोई confirmation नहीं है, but of course based on the past, हर साल almost you have a day or so का extension, so there might be extension, but you should never ever wait till the last day. ठीक है, कोई टेक्निकल ग्लिच हो सकता है, किसी पेमेंट में इशू हो सकता है द टाइम ऑफ फी पेमेंट. So don't wait for 14th of January 11:50 p.m. Make sure that you complete your registration at least by Sunday, if not beyond that. Okay. Now, so like all of you know that the universities have been classified under central, state, government, and deemed private universities. ठीक है. सो नाउ एवरी ईयर यू नो कि बहुत सारे एंट्रेंसेस होते हैं एंड द फंडा और द एजेंडा ऑफ सीयूटी इज वेरी सिंपल टू मेक श्योर जितनी ज्यादा यूनिवर्सिटीज हों वो एक अम्ब्रेला के अंडर आ जाए सो दैट यू गिव ओनली वन एंट्रेंस एंड यू आर एबल टू अप्लाई यू आर एलिजिबल फॉर 50-60 प्लस यूनिवर्सिटीज इन वन शॉट. ठीक है. लेकिन even till date, there are many private universities, they have their own entrances. ठीक है. They have their own entrances, but they are also under the umbrella of CUET PG as well. Right? So students face for सबसे पहला issue कि are they still continuing with their own entrance? क्या वो यूनिवर्सिटीज अपना खुद का एंट्रेंस लेंगे, चाहे वो एंट्रेंस हो, चाहे वो पीआई हो, पर्सनल इंटरव्यू हो, या किसी भी सॉर्ट ऑफ एडमिशन प्रोसेस में वो इंडल्ज होंगे, या दे विल डायरेक्टली एक्सेप्ट सीयूटी स्कोर. सो दैट्स द प्राइमरी क्वेश्चन. क्योंकि अगर मैं पिछले 5-10 सालों से एक प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ, राइट, दैट आई विल हैव माई ओन एंट्रेंस एग्जाम. बेस्ड ऑन दैट I'll have another stage 2. I'll call students for personal interviews and then I will shortlist the final student. तो अगर वो प्रोसेस चलता आ रहा है, so are they still continuing in 2026 as well or not? Because अब उनका नाम आ गया है सीयूटी पीजी की यूनिवर्सिटी की लिस्ट में. ठीक है. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड बी अवेयर अबाउट इट. कल को ये ना हो कि दैट यूनिवर्सिटी इज ईदर नॉट अंडर सीयूटी एट ऑल, जो कि आप क्रॉस चेक कर सकते हो अंडर द यूनिवर्सिटी लिस्ट. ऑल्सो सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो यूनिवर्सिटी लिस्ट है दैट कीप्स ऑन अपडेटिंग. ठीक है. अगर आप ऑफिशियल बुलेटिन में भी जाओगे, ब्रोशर में भी जाओगे, एनटीए देमसेल्व्स मेंशन दैट द यूनिवर्सिटी लिस्ट कीप्स ऑन अपडेटिंग इवन टिल द लास्ट डे. ठीक है. तो मेक श्योर जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, बिकॉज टॉकिंग अबाउट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज देयर कैन बी हंड्रेड्स ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, राइट, कहीं पे भी हो सकती है. तो आपको सबसे पहले जाके चेक करना है कि क्या मेरी जो वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वेदर इट्स अंडर सीयूईटी और नॉट. ठीक है. check done, it's there, then you're sorted and kind of assured कि हाँ, let's say ABC यूनिवर्सिटी मेरा टारगेट है and is there under the private और deemed यूनिवर्सिटी के लिस्ट में. तो that means CUET तो वो एक्सेप्ट करेगा ही करेगा. ठीक है. अब उससे क्या होता है,
पहला, कि आपके पास एक एंट्रेंस है जिससे आपको वहां पे एडमिशन मिलेगा, ठीक है। यू डोंट हैव टू मैंडेटरली सिट फॉर दी अनदर एग्जाम, ठीक है, क्योंकि आप अपने सीयूटी स्कोर पे रिलाई कर सकते हो। In case they do go for their own entrance, do go for the admission process on their own, जिसमें वो एंट्रेंस करवा सकते हैं या पीआई रख सकते हैं, कोई भी प्रोसेस कर सकते हैं। अगर कल को वो प्रोसेस भी होता है, देन यू हैव अनदर शॉट टू गेट एडमिशन टू एबीसी यूनिवर्सिटी, ठीक है। So the funda is कि they can have their own process or they cannot have. That's completely voluntarily their process, their decision. It's at their own discretion. अब एक छोटा सा एग्जांपल फ्रॉम 2025 से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ऑफ कोर्स ये काफी सारी यूनिवर्सिटीज ने भी किया है, बट बिकॉज जब अगर हम एक इस हॉट शॉर्ट लिस्ट में देखेंगे, सो देयर मेनी बिग बिग नेम्स, मेनी नोन यूनिवर्सिटीज, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल last year Gokhale of course is part of CUET, right? But later on they offered few seats with their own entrance as well, okay, and that was a very good news for all the students कि यार मैंने ना CUT में अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, I wasn't able to give my 100%, but luckily Gokhale came up with their entrance, and student had another chance, another shot. Similarly for couple of more universities also, ठीक है। अब उनके लिए क्या है, उनके लिए ये है कि वो आप लोगों को, अब यूनिवर्सिटीज आपको एक अपॉर्चुनिटी देती हैं कि फॉर वट एवर रीजन यू आर नॉट एबल टू गिव योर 100%, यू आर स्टिल नॉट डिनाइड बेस्ड ऑन ओनली वन एग्जाम, ठीक है। एक एग्जाम ऑफ कोर्स हम चाहते हैं सारे एग्जाम्स एक अम्ब्रेला में आ जाएं, बट इन केस वर्स्ट केस सिनेरियो, वो एक अम्ब्रेला के अंदर जो पेपर सब आ रहे हैं, दैट इज नॉट अ लकी डे। लेट्स से वी स्टडीड let's say 16 hours in a day for the past 2 months, ठीक है, 16 घंटे हमने पढ़ा, but that day wasn't for us at all। होता है, of course 1% चांस है, but by offering students another chance, another shot, it's something, I would say it's positive, it's good for the student। of course आपको फिर से फी पे करनी पड़ेगी उनकी एप्लीकेशन की, नो डाउट, that's another additional cost, but at the same time it also giving you another chance, another shot, that you don't have to go for a drop year, ठीक है। वो drop year will be even more harming as compared to paying let's say 1200 rupees for an application fee and getting another chance, okay। So whether you, जैसे for example अजीम प्रेम जी के अभी I guess that's also part of CUT. So reason I just saw the name because students have given their entrance as well already, and they're waiting for the results. तो उन्होंने ऑलरेडी अपना एंट्रेंस कंप्लीट कर लिया है, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ CUET। सो आई वुड से देर इज नो हार्म एट ऑल इन ऑफरिंग स्टूडेंट्स टू चांसेस, ठीक है। एक आप अपने एंड से कर सकते हो, एक आप सीयूटी के एंड से हो ही रहा है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। नाउ इट्स एट स्टूडेंट्स डिस्क्रिशन कि मैं जाके उनका भी उनका इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस जाके दूं ना दूं, या मैं सिर्फ रिलाई करूंगा सीयूटी पे, दैट्स कंप्लीटली ऑल योर चॉइस, बट एटलीस्ट यू हैव ऑप्शंस। आपके पास ऑप्शंस तो है कम से कम। दिस वाज मतलब अजीम प्रेमजी इज अनदर एग्जांपल, राइट? यू हैव अहमदाबाद यूनिवर्सिटी, okay, and there are plenty of names out there. They conduct their own exams, personal interview and stuff. Okay. So the funda at the end of the day is key. You need to shortlist. You need to shortlist, uh, even at least have one private university in the bucket of five top universities. ठीक है, और उसको आप चेक करो whether they are under the CUET umbrella or not, whether they are conducting their own entrance exam, और अगर कर रहे हैं क्या प्रोसेस रहता है। लास्टली बिफोर आई रैप अप, ठीक है, वोंट टेक मोर टाइम, ठीक है। सो ये बात भी ध्यान में रखना, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज दो विंडो में एंट्रेंसेस लेती हैं, ठीक है, दो विंडोज में। द राउंड वन राउंड टू डजंट मीन सब्सिक्वेंटली, बट राउंड वन राउंड टू मीन्स कि एक मैंने विंटर सेशन के टाइम पे ले लिया, एक मैंने समर सेशन के टाइम पे ले लिया। सो बी अवेयर कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी जो आप टारगेट कर रहे हो, दे आर ऑफरिंग टू विंडोज ऑफ एंट्रेंसेस और नॉट, ठीक है। क्योंकि इन केस अगर आप विंटर वाले में
इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपने सिलेबस नहीं किया है, देन मे बी राइट आफ्टर द सीयूटी आप बैठ सकते हो। आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, आपने सिलेबस कर लिया है, रिवीजन कर लिया है, तो आप उस टाइम पे बैठ जाओ। या लेट्स से एक हफ्ता 2 हफ्ता पहले सीयूटी से पहले हो जाता है एंट्रेंस, तो आप उसके लिए पढ़ रहे हो, तो आप सीयूटी के लिए आपका एक रिवीजन हो जाएगा उसके थ्रू। सो मेक श्योर यू चेक वेदर दे आर फॉलोइंग ओनली वन विंडो और दे आर गोइंग फॉर टू विंडोज ऑफ एडमिशन। ठीक है। So that was a small session, small informative session, nothing more than that. So I hope by now all of you have already created a bucket or a basket of universities that you feel this is my target, this is my goal. And अगर मैं इनमें से किसी में भी मेरा एडमिशन होता है, it's worth a year. Okay. Thank you so much, guys. Good night. Take care. And of course, it's pretty cold, but you still need to study for your entrances right now. Okay. Thank you so much. Good night. Take care.